प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है. वेरी बटरी. इन्वेस्ट योर मनी इन फॉर द नेक्सस प्रोमेंट सीरम. This somehow did not suit me well. Don't buy this. Hello, hi guys, welcome back to the channel. This video is gonna be a little long because I have a lot of items, a lot of products to share with you. So I've got a bunch of products with me जो मैंने ये साल में try किए हैं. So there's makeup, there's hair care and there's skin care. And here's my take on all of them. So let's start with the shortest category. Body care first. This is the Wishcare's body sunscreen. एंड ऐसा नहीं है, पता नहीं मैंने वीडियोस ये वाली वीडियोस क्यों नहीं बनाई पहले, लाइक अबाउट माई फेवरेट्स और अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स आई एम ट्राइंग, और पता नहीं क्यों नहीं बनाई मैंने. बट या तो ये ऐसा कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है. आई हैव बीन यूजिंग दिस जब से ये लॉन्च हुआ है एंड आई लव इट. फर्स्टली तो इसका ये देख लो, ये जो इसका लॉक वाला चीज़ है, सो इट बिकम्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. किसी भी बॉडी लोशन में, किसी भी ऐसे फेस वॉश टाइप में ऐसा कुछ होता है ना, इट बिकम्स सुपर ईजी क्योंकि उसके बाद ये लॉक हो जाता है, इट डज नॉट लीक. So I love that about this. So it becomes very travel friendly. I took this to my Thailand trip and Goa trip and I just love it क्योंकि इसको लगाने के ऊपर मतलब यूजुअली सनस्क्रीन्स मॉइस्चराइजिंग नहीं होता है, राइट. तो हमें पहले कोई बॉडी लोशन लगाना होता है, देन यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन. लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी थिक एंड क्रीमी. ज़्यादा निकाल लिया अभी मैंने रात के हिसाब से, बट ये देख रहे हो तो दिस इज़ वेरी थिक एंड क्रीमी और बहुत खुशबू नहीं है इसकी. अनदर गुड थिंग बिकॉज आई डोंट लाइक बॉडी लोशन माई बॉडी केयर टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस इन देम. मतलब आई डोंट प्रेफर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज. माइल्ड तो चलता है, इसमें बहुत माइल्ड सी है कि अगर आप कोई परफ्यूम लगाओगे तो उसकी आएगी ना कि इसकी, वरना मिक्स हो जाता है. सो आई डोंट लाइक दैट. It has SPF 50, PA+++, so this becomes a very good sunscreen and is also very pocket friendly, so you can just go for this. Now we can move to the hair care category. I have the IndieWild का शैम्पू कंडीशनर डुओ विथ मी. शैम्पू के बारे में आई हैव नथिंग मच टू से क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक योर रेगुलर शैम्पू. कुछ भी ऐसा अमेजिंगली अलग नहीं करता है. इट्स अ डिसेंट शैम्पू, बट हाँ कुछ ख़राब नहीं कर रहा है, ड्राई नहीं कर रहा है बालों को. सो मतलब यू कैन यूज़ इट. ऑल्सो इसकी पैकेजिंग क्यूट है, दोनों साथ में वॉशरूम में बड़े ही क्यूट लगते हैं जोड़ीदार. बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि शैम्पू में ऐसे कुछ खास खूबियाँ हैं. मूविंग ऑन, द कंडीशनर इज़ एक्चुअली ग्रेट. ये रेगुलर कंडीशनर्स से अच्छा काम करता है. दिस इज़ वेरी बटरी. तब जैसे इसका बॉटल है वैसे ही अंदर से दिखता है. अभी मैं दिखाऊंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, बट इट्स ओके, दिखा देती हूँ. वेरी बटरी. उनकी खुशबू बहुत अच्छी है. दोनों की सेम है और स्पा जैसी है. द कंडीशनर आई लव इट, बट द शैम्पू इज़ अ नॉर्मल रेगुलर शैम्पू. ओके, मूविंग ऑन. I've got the Nexxus Promend Serum with me. This is something you can invest your money in. Firstly, the packaging. My husband thought it's a perfume. लगता भी ये perfume है. This makes my hair so good, so smooth, so shiny. I mean, I love it. And for the price point, it works amazing. मतलब बहुत सारे Moroccan oil, Olaplex. There are a lot of serums that are super expensive, and I mean they do perform great. But ये वाला, I guess it's for 1,000 rupees, and it's 30 ml, 40 ml. 30 ml. But for my hair length, this has lasted me like 2 months. I got this in Feb, और अभी मई चल रहा है, एंड ही होने वाला है इनफैक्ट. अभी भी इसमें इतना बचा है, सो आई थिंक इट विल लास्ट मी टिल मिड जून, विच इज़ ग्रेट फॉर 1,000 रुपीज़ क्योंकि दिस कैन कम्पीट Moroccan oil एनी डे. इट्स अ ग्रेट सीरम. इट लुक्स वेरी प्रिटी सिटिंग ऑन द वैनिटी. खुशबू बहुत अच्छी है. अगैन थोड़ी सी स्पा टाइप्स, थोड़ी सी लक्स वाली फीलिंग है इसकी. आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर विद दिस एंड देन पुटिंग दिस इज द कॉम्बो दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. My hair smells really nice. Okay, skincare now. I'll start with the face washes. So, as I've mentioned कि मेरा skin is acne combination. So I was using salicylic acid based face wash 2 times a day. But that was making my skin very dry. So मैंने Nykaa पे थोड़ा search किया and I got this face wash from CeraVe. This is also salicylic acid based, but this one is for dry, rough, bumpy skin. So my logic says कि अगर कोई फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए है तो वो और ड्राई नहीं करेगा उसकी स्किन को, राइट. सो माई स्किन वॉज ऑलरेडी गेटिंग ड्राई. मैंने ये यूज़ किया एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी गुड फॉर मी. It is not making my skin dry and I use it twice a day, morning and night, and yes, I love it. So if you are also an oily skin person लेकिन आपकी स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा है, सैलिसिलिक एसिड वाले सामान पहले बात तो मत करो. Don't do it. Don't be me. Don't overuse salicylic acid. If you've already done, then you can switch to this face wash. Next, I've got this Dermalogical's Daily Microfoliant. Now, this one is very interesting. This comes in a powder form. So, you see the powder. So, you're supposed to mix water in this and then lather it. You can apply it on your face. So, जितना मैंने देखा है, there are 2 ways to use it. फर्स्ट इज वे एक्सप्लेन राइट नाउ, ऐसे पानी डाल के झाग लगा के, झाग बना के. एंड द सेकेंड थिंग इज टू पुट इट इन अ बोल एंड देन ऐड वाटर एंड देन मिक्स इट रियली नाइस कि वो ऐसे फ्लफी सा बन जाता है. यू कैन अप्लाई इट एज अ मास्क, लीव इट ऑन फॉर सम टाइम एंड देन
जस्ट वॉश योर फेस विद इट। इसकी कोई खुशबू नहीं है। आई मीन मैंने इसको 2-3 बार ही ट्राई किया है बिकॉज अभी एक्ने हो गया है, सो आई एम नॉट एक्सपेरिमेंटिंग, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू वेरी नॉर्मल सिंपल रूटीन दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस, देयर इज नो फ्रेग्रेंस व्हिच इज अ गुड थिंग। ऑल्सो अबाउट दिस वन ऑल्सो डज नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस। सो इसमें भी कुछ खुशबू नहीं है, बट आई कैन स्मेल राइस इन इट एंड इट सेज ब्राइटनिंग राइस बेस्ड पाउडर एक्सफोलिएट। सो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोडक्ट अभी तक जितना मैंने यूज़ किया है, बिकॉज आई कुड सी विजिबली थोड़ा सा ब्राइट इन अप फेस एंड इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइस। कभी कभी मैं मास्क बनाती हूँ ऑफ राइस फ्लावर विथ कर्ड एंड एवरीथिंग फॉर टैनिंग एंड इट वर्क्स ग्रेट। तो आई थिंक दिस विल वर्क गुड ऑन द स्किन। फॉर द टाइमिंग आई हैव जस्ट गिवन इट अ पॉज। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड अ गुड प्रोडक्ट। ओके, next is the Centella Ampule. I've already posted a skincare video where I've talked about this, but मैं फिर भी बता देती हूँ that this one is a great serum when you are breaking out or when if your skin is very sensitive or red or irritated. I mean, this works great for calming down your skin. जैसे अभी मुझे थोड़ा breakout हो रहा है, so I don't use a lot of products. So उसके लिए I call for this serum because I was like कि मैं रात में थोड़ा सा if I'm using something to treat my acne at morning, I want something to calm down my face and to let it breathe and just be. So उसके लिए I called for this ampule and it works great. ऐसा लगता है पानी डाल दिया अपने फेस पे। ऑलरेडी ख़त्म हो गया तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, पर 2-3 ड्रॉप्स दिखा देती हूँ। देखा वो कैसे गिर गया। इट्स ठंडा भी है, ऐसा ही लगता है जैसे ठंडा पानी आपने डाल दिया हो। बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। दैट्स अबाउट दिस सीरम। नाउ आई हैव 2 sunscreens to talk about. First one is this Beauty of Joseon or Joseon, however you call it. This one is the original version. Everybody knows about this sunscreen, but this somehow did not suit me well. I even tried the aqua version of this. Even that did not suit my skin. I mean, I felt both of these made my skin feel heavy. I did not enjoy it on my face. When I tried it on my hands, it feels good. Not amazing. This one not amazing. The blue one, aqua one felt really nice because that is supposed to be for oily skin, but even that felt very heavy on my face. So my husband ended up using that one, and this too. This is his sunscreen, but I wanted to talk about it because this did not suit me. Whereas on the other hand, there's this other sunscreen from Laneige. This is their water bank sunscreen. This is the type of texture that my skin loves. It is amazing. As the name says, water bank. It is very light, watery in texture. The one thing that it has is fragrance. It is not that strong. Light, mild and fresh type of a fragrance. The texture is amazing. Skin looks glowy after the use and also feels cooling on my face. Okay, next I have this dark spot correcting serum. This is from Accessfire and it was very viral on Instagram, so I thought कि ले लेते हैं इसको. There was a sale on Nykaa, I thought of just getting my hands on it. I only use it at night because I am only using this. No other treatment at night. तो I am not sure that यही है जो मेरे डार्क स्पॉट्स को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है या खुद ही हील हो रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस डज नॉट इरिटेट द स्किन. इट्स ऑल्सो वेरी लाइट इन टेक्सचर. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स, वेरी लाइट एंड अगेन हैज़ अ कूलिंग सेंसेशन. इसकी खुशबू इज़ वेरी लाइक हर्ब्स जैसी की, कुछ जड़ी बूटियों जैसी खुशबू है. दैट आई applied on my face. Very strong था, ऐसे जैसे मैंने कोई दवाई लगा ली अपने फेस पे. So far I like it. I think it has worked on lightening the dark spots and pigmentation. एक बार whatever bumps I have on my face, जब वो सब चले जाएंगे, that will be the perfect time जब मैं इसको ढंग से टेस्ट कर पाऊंगी. So far I like it, so I will continue to use it. Okay, let's move on to the makeup category now, जो कि बहुत सारी है. Okay, firstly, because I started making videos, I have started to collect more makeup and more skincare and everything. क्योंकि पहले मैं videos नहीं बनाती थी, पहले मेरा channel ही नहीं था. I used to use Benedent only, but because I'm making videos, इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है makeup, skincare, and I also want to try new makeup. I call for this Beach Tint by Ilana. And I kid you not, this is a very beautiful tint. इसको मैं अपनी cheeks पे लगा के दिखाती हूँ. इससे मैंने लगाया हुआ है थोड़ा सा, but look at this, ठीक है. अब मैं इसको ऐसे रहने भी दूँगी ना, तो ये स्टेन नहीं करेगा एंड इट ब्लेंड्स सो ईजिली. सी, इट गिव्स अ वेरी नेचुरल फ्लश ऑफ कलर. अब मैं एक दूसरे गाल पे भी लगा लेती हूँ, वरना मैं अनइवन लगूंगी. थोड़ी सी डोज भी लगा लेते हैं. सो ना, यू कैन टेक योर टाइम विद इट कि तुमने लगा लिया है, ढक्कन बंद कर लिया है, एंड इफ़ यू विल स्टार्ट ब्लेंडिंग नाउ तो भी ये स्टेन नहीं करता. विल ब्लेंड वेरी ईजिली. I don't think so I have to speak much after showing you the demonstration. This is a great tint. Half से भी कम price में है Benetint के. So yeah, all of you all who don't want to spend 2,000, 2,500 on a lip and cheek tint, you can go for this. This is I think 500 rupees and it is very beautiful. Okay, moving on.
So this is a mascara. So I basically wanted to try out new makeup, तभी मुझे ये मिला है. So उसी दौरान मुझे एक ये mascara मिला है from Etude House. This one is their Curl Fix. मैं एक ऐसा mascara ढूंढ रही थी जिसका wand एकदम पतला हो. I've seen many videos, पर वो इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे, जिसमें the wand was very thin, evenly product distributed होता है, and it gives the most natural looking lashes. तो इसका wand बिल्कुल वैसा ही था, but this does not give any sort of volume, any sort of length. मतलब इसको लगाना ना लगाना बराबर है. एंड द सेकेंड मोस्ट वर्स्ट थिंग इज दैट it does not come off even with any makeup remover, even with any cleansing balm or cleansing oil, and after using face wash. This was, my lashes were very hard. उसके बाद से मैंने इसको लगाया ही नहीं. It's just been sitting in my makeup pouch. Don't buy this. Next I have is this blush from NARS. This one is in the shade Orgasm. जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे नहीं पता था, या मैंने ढंग से नोटिस नहीं किया. I don't know, I just randomly ordered it just to try out. This is the shade. It looks a lot pink on the camera, but it is peachy. Yeah, it's more peachy. It's like a darker version of the bottle. It has got this shimmery particles to it. Okay, so I was not expecting the glitter particles in it. I actually ordered this peach blush for my Thailand trip so that I have that sun-kissed look on my face. But because इसमें the shimmery particles थे, I just did not feel very natural. तो मैं उसको उतना तो apply नहीं कर पाई. But for any Indian look, or maybe if I want to highlight my cheeks, you know, for that glowy, blushy sort of a look, this is the best. So I don't regret buying it. It is a beautiful shade. So yeah, next I have, ये मैंने अभी मंगाया है. Just got delivered last week. This one is the Ceramide Squalane Lip Glaze by Kiro Beauty. Now, I do not own anything from Kiro, or because the brand is doing so well, I just wanted to try out their lip glaze. I don't see the shade name written here. I'll mention this in the description. This is basically a high shine lip gloss, and it is supposed to leave a stain after it comes off. So I'll show you how it looks on the lips. This is how it looks. I like the glossiness. थोड़ा सा इसका साइड से मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज इससे वाले एप्लीकेटर्स थोड़ा सा गंदा जल्दी हो जाते हैं. बट दिस इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, smells amazing, and the color also is not bad. Looks a little rustish, orangish on my skin tone. I usually go for very nude colors. Okay, so now I'll remove it just to see कि stain कैसा आता है. It didn't leave a stain on my lips, and that looks quite natural. I like it. And with that, I got this mini lipstick free. I remember the shade of this one. This one was in Cocoa Walnut. Yeah, this one is in the shade Cocoa Walnut. And surprisingly, पहली बार कोई भी free चीज़ मुझे अच्छी लगी है. सब कुछ same लग रहा है कैमरा में. This one is actually very mauvish, sort of a brown shade. I love the shade. इससे ज़्यादा I like this one more, मतलब the color. This one is creme gloss. That's why I'm thinking that why is it so shiny? Win-win situation, guys. Next, I've got this lip pencil. No, sorry, not lip pencil. This is the one stick from Ruby's Organics. Now I love such products जो multi-purpose होते हैं. This is how it looks. Okay, so I use it to outline my lips. Use it like a smoky eyeshadow, linerish sort of a thing on my lids, and I also use it to contour my face थोड़ा बहुत. It is so creamy. It just glides on so easy. So this is a star product. I think मैं इसके एक दो और shades लूँगी, all in the darker brown colors में, so that I can use it on my eyes and for the contouring. This one is in the shade Pecan. Definitely ordering more of these. Okay, moving on. I've started using this brow gel from Benefit. I use this right now as well, and I'm loving the look. I don't have very thick or fuller eyebrows. This helps me achieve that thickness. I won't be able to show it right now because it's already done. It's already set. So I just love using it to give that fuller and very foxy effect to the eyebrows. Nice addition to my makeup routine. Next I have this skin tint by House of Makeup. I've seen everyone talking about this, so I thought कि चलो लेके देखा. And yes, no surprises, this works great. Blends easy. Does not have very high coverage. Light on the skin. Not as light as the Smashbox Halo, but works great. And you can definitely call this a dupe of the Smashbox Halo. This is how it looks. So you see this is gliding. So it definitely is not thick, has this creamy texture, gives you a glowy skin, and that's all that you all need. This one's a thumbs up. Now I have this baking powder from Huda Beauty. Great to set your under eyes, and it also gives a lot of coverage.
and it also gives that blurry effect to the under eye, so you don't see the lines and the concealer on it, and the eyes are all brightened up. Once I get over with it, I will definitely buy the bigger size because I cannot let go of this. Next, I have this blush from Kylie Cosmetics. It is in the shade Baddie on the Block. I think this was a very famous shade. When I saw this one on sale on Sephora, I ordered it. This is peachy pinky everyday sort of a blush. Great for the days when you want to go for a soft breezy look. Just looks amazing and stays onto the skin for a very long time. So yes, this one is also a very good purchase. And the last thing I have is the Dalwa's First Spray Serum. All the hype that this product is getting, this deserves every single compliment. ये मैंने अभी मंगाया recently, that is why ये इतना सही यूज़ हुआ है. I don't know if you can see the glow, but मैंने ये आज भी लगाया था, and it instantly gives that glow to the face, that hydration to the face. I always had this concern that whenever I used to set my under eyes with the baking powder, obviously when I use the puff, then the powder used to come till here, right? And even if I remove it, it used to mattify this part of my face. But ever since I've got this, and my skin didn't feel dry from here or anywhere. It was glowy and hydrated and basically looking very healthy. And the most important thing that I was concerned was that because this has oil infused in it, this might aggravate my acne, or this may clog my pores, or this may be comedogenic, but this is none of that. So it is safe to use on my skin, and what is better than that? I have covered everything that I had with me. Yeah, I've been talking for a while now. I am thirsty and I really hope that this video was helpful to you. I'm gonna go and have some water. See you guys in another video. Thank you so much for watching. Bye bye.